and welcome to all in my today's video. Today I have to again come in front of you with your grammar portion, and today's topic is as usual also very important for you. And can you guess it, what is the topic today? Okay, I'll tell you. Today I am going to teach you animals and their young ones. Means एनिमल्स और उनके जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं. लाइक जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे बेबीज़ के नाम होते हैं, वैसे एनिमल्स के भी बेबीज़ के नाम होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज डॉग. DOG डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. एंड द नेम ऑफ डॉग बेबी इज़ पपी. डॉग का जो बेबी होता है उसको हम पपी कहते हैं. सो द डॉग यंग नेम इज कॉल्ड पपी. ओके. आफ्टर दैट द सेकेंड इज कैट. CAT. cat. Cat means billy. And the name of cat young ones is kitten. 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 The kitten is the baby name of cat. Okay. After that, lion. 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 Lion means शेर. And lion is the king of jungle. मैं आपको बार बार ये बताती हूँ. ओके, आज फिर से मैं बता रही हूँ कि lion is the king of jungle. And cub is the baby name of lion. cub. 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 जो lion का बेबी होता है उसको हम cub कहते हैं. Now hen. Hen means मुर्गी and hen gave us egg. So HEN. hen. And the hen's young ones is called chick. 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 जो hen का बेबी होता है उसको हम लोग चीक कहते हैं. ओके. आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन. शीप. SHEEP. शीप. शीप मीन्स भेड़. जिससे एंड शीप गिव अस वुल. हमें ऊन मिलता है इससे. एंड द नेम ऑफ बेबी शीप इज लैम. LAMB. लैम. लैम इज द बेबी नेम ऑफ शीप. Okay. After the discussion with lamb, let's move on. Cow. 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 Cow means yes, guy, and cow gives us milk. And the name of baby cow is calf. 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 So calf is the baby name of cow. The next is horse. 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 Horse means घोड़ा. And the baby of horse name is goat. आप goat भी कह सकते हो. इसके अलावा जो horse का बेबी नाम होता है उसको आप foal भी कह सकते हो. ओके. so two names होते हैं. The first is colt and the second is foal. The next is elephant. Elephant is the biggest animal of the land. ELEPHANT. Elephant means hathi. And the name of baby elephant is calf. 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 The name of baby elephant is calf. After that, rabbit. 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 Rabbit means khargosh. And the baby name of rabbit is bunny. 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 Bunny is the baby of rabbit. After that, goat. 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 Goat means yes, bakri. Goat give us also milk. Okay, so goat also give us milk. And the name of baby goat is kid. 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 The next is deer. 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 Deer means heron.
And the name of dear young ones is, can you guess it? Okay, I'll tell you. Fawn. 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 The name of baby deer is fawn. So these are the animals and their young ones. I hope you understand this. After that, let's move on some. After discussion with oral portion, just have a look some exercise, and this exercise is related on animals and their young ones. So the first is unscramble the letters to complete the sentences. Means कि यहाँ पे आप जो सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस के बाद एक छोटा सा वर्ड्स लेटर्स जो हैं वो स्क्रैम्बल करके दिए हुए हैं, यानी जंबल करके दिए हैं. आपको उन्हें करेक्ट वे में आइडेंटिफाई करके यहाँ पे राइट डाउन करना है, और जो नेम आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे वो आपका उस एनिमल का बेबी नेम होगा. ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद मी. द फर्स्ट इज अ यंग गोट इज कॉल्ड अ, हमने ओरल में ऑलरेडी पढ़ा है कि उसको हम किड कहते हैं. सो KID, kid. The next is a young lion is called a, yes, CUB, cub. A young cat is called a kitten. KITTEN, kitten. A young wolf is called a, is also called a cub. A young duck is called a, yes, duckling. DUN, it's duckling. DUNCKLING, duckling. Okay. The next is a young bear is called a, again, a bear baby's name is cub. Okay. A young horse is called a, सी, मैंने आपको दो नेम बताए थे. एक तो बताया था वोल्ट, एंड दूसरा नेम मैंने आपको बताया था फॉयल. फॉयल एंड कॉल्ड. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल, मीन्स FOAL. A young deer is called fawn. FAWN, fawn. A young sheep is called, yes, it's lamb. A young hen is called chick. CHICK. Okay, chick. So this is the exercise, and this exercise is related on your animals and their young ones. Repeat again. A young goat is called a kid. A young lion is called a cub. A young cat is called a kitten. A young wolf is called cub. A young duck is called duckling. Okay. A young bear is called again cub. A young horse is called foal. A young deer is called fawn. A young sheep is called lamb. And the last, a young hen is called chick. So this exercise is done successfully. I hope you would like it and you understand this name. But guys, आपको ये लिखने के साथ साथ आपको ये स्पेलिंग्स लर्न भी करनी है विद नेम, कि किस एनिमल को हम क्या कहते हैं. ओके, और उनके बेबीज़ को हम क्या कहते हैं. सो गाइज, now I'm going to wind up my chapter here. Tomorrow I will come with a new chapter of your English grammar syllabus. So till then, have a nice day and stay safe.